Good morning, students. A warm welcome to my next class, tense. आपने सुना होगा कि टेंस यदि हमें नहीं आते तो हम ग्रामर का कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं कर पाते। यह बात कुछ हद तक सही भी है। टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस यदि हमें नहीं आएंगे, यदि हम टेंस में पारंगत नहीं हैं, तो हम वॉइस चेंज करना नहीं सीख सकते, हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं सीख सकते, हम इंग्लिश ग्रामर की स्किल्स नहीं सीख सकते। इसलिए टेंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आइए आज हम टेंस सीखने का प्रयास करते हैं थ्रू टाइम लाइन, क्योंकि टेंस और कुछ नहीं है, टेंस टाइम ही है। किसी एक्शन का टाइम बताने वाले उसको हम टेंस कहते हैं। अगर एक्शन का हमें टाइम पता है तो हमें उसका टेंस भी पता है और हम उसी टेंस के अनुसार वर्ब फिल इन कर सकते हैं, सही वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। टेंस मीन्स टाइम। व्हाट डज इट मीन? टाइम। इफ वी नो द टाइम ऑफ एक्शन, वी कैन नो द टाइप ऑफ टेंस। We can divide time into three basic parts. First is time now, means present. Second is time then, means past tense. And third is time yet to come, means future. Time can be divided into three basic parts: now, then, and to come. Present, past, and future. यहां पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज टाइम लाइन। आप अगर आगे जो मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी एक्शन का टाइम यदि हमें पता चल जाए तो हम टेंस को आसानी से पता कर सकते हैं, उसके टाइप का और उसमें कौन सी वर्ब का यूज होगा, इस बात का। तो आइए हम इस टाइम लाइन के माध्यम से जानने का प्रयास करें कि टाइम ऑफ एक्शन कहां और क्या होता है। इस टाइम लाइन को आपको ये दो लाइनें दिखाई दे रही होंगी जो खड़ी लाइनें हैं, ये तीन पार्ट्स में इस ब्लैक लाइन को डिवाइड करती है। ये बीच का जो पार्ट है, ये है, इतना जो पार्ट है, ये है प्रेजेंट। दिस इज प्रेजेंट टाइम, दिस इज पास्ट एंड दिस इज फ्यूचर। यहां मैंने लिखा भी है पास्ट टाइम, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम। Tense are based on the time of action: present tense, past tense, and future tense. In this way, there are three tenses in total, and we can further divide them into four parts each: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. हमें कैसे पता चलेगा कि ये indefinite है? Very simple. Indefinite means time of action is not definite. If you don't know the time of action exactly, it is indefinite. Either it is present indefinite or past indefinite or future indefinite. Next is, if time of action, if action is in progress or was in progress or will be in progress, it is continuous. If action is in progress, it is continuous. Continuous means लगातार, निरंतर। एक्शन के होने को हम continuous कहते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। आपने सुना होगा कि फला फला बच्चा साइकिल चलाने में परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स उसने वो काम परफेक्टली कर लिया है। अभी अभी अगर कोई काम पूरा हुआ है तो उसमें हम परफेक्ट टेंस समझते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोग्रेस में होता है और एक टाइम फ्रेज दिया होता है कि कितने समय से वो टेंस, वो एक्शन चल रहा है। इस प्रकार से हम इन तीनों टेंस को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से अगर हम टोटल नंबर ऑफ टेंस की बात करें तो 4 multiplied by 3, there are 12 tense in English grammar.
आइए हम इस टाइम लाइन के माध्यम से और एक एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करें ये जानने की कि टेंस कौन सा टाइप का टाइम ऑफ एक्शन से हम कौन सा टेंस और कैसे बता सकते हैं। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइम ऑफ एक्शन फिक्स नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल मीन्स मैं प्रेजेंट में भी जाता हूं, पास्ट में भी जाता था, आगे भी जाऊंगा। टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टाइम इज नॉट गिवन, टाइम इज नॉट डेफिनिट, दिस इज a usual action. When a usual action takes place, it is present indefinite tense. Second is, if the action is in progress, action past में शुरू हुआ and at the time of speaking, हम यहां बोल रहे हैं कि ये action हो रहा है, if at the time of speaking or at present or now action is in progress, ये जो क्रॉस का मार्क है ये एक्शन है। ये पास्ट में शुरू हुआ, कहीं आगे फ्यूचर में जाकर खत्म होगा, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्शन इज इन प्रोग्रेस। इट टेल्स अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट इज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, दिस पार्ट टेल्स अबाउट आवर पास्ट टाइम। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन कब कंप्लीट हुआ? प्रेजेंट से जस्ट पहले, अर्थात अभी अभी कंप्लीट हुआ, जस्ट कंप्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। इन दिस वे वी कैन से द टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। It's just little while ago. It's just little ago. It's just while ago. The action has been completed, but its effect is still in the present. इसका effect अभी तक है। For example, I have finished my lunch. Effect कैसे है? Means now I need not to take lunch. Or there is no lunch left for me. In this way, its effect comes up to present. That's why it is present perfect tense. In case of present perfect continuous, action was started in past and it is in progress and it has not been completed. It is a time phrase is always given there, either a point of time or period of time. In the same way, if I take past indefinite tense, it means action was started in past and we don't know the definite or specific time of the action, but it was completed in past. That's why we use here simple past tense. Past continuous tense, it means action was started in past and it was in progress at certain point of time in past itself. Then we can say the action was in progress in the past. Third is past perfect. Past perfect means the action was started in the past and it was completed in the past itself. It had been completed in the past itself. Then we say past perfect. One more thing is there are two actions. One action had been completed previous and then the later action, prior action and later action. There are two types of actions. One is known as prior action, the second is known as later action. एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है और दूसरा उसके बाद। जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद दूसरा शुरू हुआ, तो जो पहले कंप्लीट हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे और बाद वाले के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर प्रायर एक्शन यूज पास्ट परफेक्ट एंड फॉर लेटर एक्शन यूज सिंपल पास्ट। इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन पास्ट में ही शुरू हुआ, एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम
कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका था और बाकी जो एक्शन था दैट वाज इन प्रोग्रेस एंड टाइम फ्रेज इज गिवन either since a point of time or for a period of time. Next is future tense. What is about future? Here is the time part of future tense. The action that will take place in future. It has not taken place. It will take place in future. It will happen in future. And time is not definite. Future indefinite. When action will start in future and it will be in continuation or in progress at a certain point of time in future. At that time we can say this action is in future continuous tense or future progressive tense. Future perfect. When action will start in future and it will have been completed in future at a certain point of time, then we can say the tense is in future perfect tense. And then we come to the last type of tense, future perfect continuous tense. The action will start in future. Some part of action will have been completed and the remaining part will be in progress with a time phrase. Then we can say this action is in future perfect continuous tense. In this way, we can say that there are three tenses. Each has four parts: indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. We have tried to understand the concept of tense and its types through timeline. Timeline means the time of action. And with the help of time of action we can know the type of tense. हम आगे सीखेंगे कि कौन से टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होगा. Good morning students. A warm welcome to next class based on tense. Today's topic is use of verb and its forms in different type of tense and use of helping verbs in different type of tense. हमने अभी तक टेंस का इंट्रोडक्शन और टाइमलाइन के माध्यम से टाइम ऑफ एक्शन के बारे में जाना. आइए आज हम जानते हैं कि जो 12 टाइप के टेंस हैं उनमें हम कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म कहां यूज करेंगे और कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस परिस्थिति में कहां यूज करेंगे. सबसे पहले इसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि हमारे जो 12 टाइप के टेंस हैं उनमें वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टेंस में यूज होती हैं. डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स डिफरेंट टेंस में यूज होती हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहां यूज होगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर उसके साथ एस या ई एस लगता है. एस और ई एस तब लगता है जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर हो. सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यदि सिंगुलर की अपेक्षा प्लूरल हो या फिर आई और यू सिंगुलर हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक और दे रीड अ बुक, आई रीड अ बुक. In this way, if we have to change affirmative sentence into negative and interrogative, we use either do or does. For singular subject, we use does. And for I and you singular and all the plural subject, we use do. Keep this thing in mind. Do and does are the helping verbs of present indefinite tense and we use V1
or s or es with V1 in present indefinite tense. In case of past indefinite tense, we use V2. This is the only type of tense in which we use second form of verb. This is the most important tense among all the tenses because it is used to tell stories, it is used to write reports, it is used to define, to express something happened in the past. In this way, this is the only tense where we use second form of verb. And we use helping verb did. Did is the helping verb of simple past tense. Keep this thing in your mind. Either subject is singular or plural. We use did to make sentences into negative or interrogative. In case of simple future tense, we use V1, first form of verb, after helping verbs shall or will. We use shall with first person pronoun I or we, and will with second person or third person pronoun with will in general sense. And in case of threat, determination and promise, this rule gets changed. I have discussed it already in one of the previous videos. यहां हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में कौन कौन सी वर्ब्स यूज होती हैं और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं. आप एक बार इस चार्ट पर यदि नजर दौड़ाएंगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगी और आपको तुरंत याद आएगा कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब यूज होगी और कौन सी हेल्पिंग वर्ब. अब यहां आप देखिए कि सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल फ्यूचर में दोनों में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. केवल सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, तीनों में वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4. व्हाट डज इट मीन? V1 plus ing. If we add ing to first form of verb, it becomes V4. Present indefinite, present continuous, V4. Past continuous, V4. Future continuous, V4. There is no difference. We use V1 plus ing for all the tenses of continuous. The difference is regarding helping verbs. In case of present continuous, we use these forms of be, as we have discussed already. Is, am, are. Is used with singular subject. Am is used with I. And are is used with all the plural subjects and you, singular and plural both. In case of past continuous, we use was and were. Was is used for singular subjects and were is used for or used with plural subjects and singular you. Next is future continuous tense. In case of future continuous tense, we shall use be after shall or will. In case of shall and will, we have discussed already. Now, let us come to perfect tense. In case of perfect tense, we use V3. Present perfect, past perfect, and future perfect. In all the types of perfect tenses, we use third form of verb. In this way, what are the helping verbs? Has and have. Has is used with singular subject, except I and you. Have is used with I and you singular
and all the plural subjects. Verb and helping verb must agree with the subject. Next is, in case of past perfect tense, we use had. Either the subject is singular or plural. There is only one helping verb for past perfect tense. Next is future perfect tense. In case of future perfect tense, we use have after shall or will. Use of shall and will have already been discussed. Now come to the perfect continuous tense. In case of present perfect continuous tense, we use been after has or have. With singular subject, we use has, and with I and you and all the plural subjects, we use have plus been. In case of past perfect continuous tense, we use been after had. Either the subject is singular or plural. In case of future perfect continuous tense, we use have been after shall or will. Case of shall or will have been discussed already. Means with first person pronoun we use shall, second and third person pronoun we use will. Have been. In this way, we use different helping verbs and different verbs in different types of tense. Now, have a glance at this board. Have a glance at the chart. Have a glance. What do we see? We see that V3, all the perfect tenses V3, we have in three type of tenses third form of verb. 3, all the three perfect. And we use V1 ing, V1 ing, V1 ing, V4, V4, V4. All the continuous, all the perfect continuous in 6 type of tenses we use V1 plus ing. 6 plus 3, 9. बचे कितने? 3. 3 में से सिंपल प्रेजेंट V1, सिंपल फ्यूचर V1, 11, and the last one is simple past tense. We use V2, second form of verb. In this way, we use different forms of verbs in different types of tense and different helping verbs in different type of tense. Make a chart, learn the use of verbs and helping verbs in different tense. Till next video, thank you.